Hello, welcome back and good morning. Now we are going to study Badhirya, which is compared with deafness. In Ayurveda, Badhirya is described into two types, that is Vataj and Vatkafish. And in modern, it is of three types, sensorineural, conductive, and mixed. For the comparison purpose, Vataj Badhirya is compared with sensorineural deafness and Vatkafish Badhirya is compared with conductive deafness, because discharge usually comes from Vat Kafaj Vadhirya. So that is why it is compared with conductive deafness. And in case of mixed deafness, components of both uh, conductive as well as sensorineural deafness are present. So let's move to the lecture. Badhirya. It is important disease and is mentioned in your syllabus, both Ayurvedic as well as modern portion. So coming to its lakshan, स एव शब्दानुवा यदासिरा कफानि आतो वंस्तस्य तिष्ठति तदा नरस्य अप्रतिकार से विनो भवेतु वात्रिम संशयम करो. इसका अर्थ है कि वायु जो है सिराओं के मार्ग द्वारा कफ को सार लेकर शोध प्रदेश में या कर्ण में अवस्थित हो जाती है, और अगर व्यक्ति या रोगी द्वारा उसका प्रतिकार नहीं किया जाए तो वातज रोग की उत्पत्ति हो जाती है. फिर चिकित्सा के विषय में कहा गया है कि इसमें चिकित्सा में बिल्व तेल के योग दिए गए हैं, बिल्व तेल प्रथम एवं बिल्व तेल द्वितीय. तो बिल्व तेल प्रथम में जो योग है वो इस प्रकार से गवाम मुद्रण बिल्वानी पिष्टवा तेल विपाच्य सज्जनचल सदुग्धश वाधीरे कारणपूर्ण. अर्थात गोमूत्र, बिल, फल मज्जा लेकर इसे चतुर्गुण तेल से चतुर्गुण जो है जल एवं दुग्ध लेकर बाध्य रोग में कारणपूर्ण किया जाता है. दूसरा योग जो है वो बिल्वदेल 2 के नाम से वर्णित है. ये बेचारा सुक्षुब्ध की इन्हें वर्णित किया है उत्तर तंत्र के 21 अध्याय के 36 से 37वें श्लोक में. इसमें बोला सिद्धम मधुक बिंबी भी सिद्धम वाजे प्यसी अपि बिंबिक वादे बिंबथ्योष्णम शीधिभूतम तद्रितम पुण्य पंचदित अक्षीरम सिता मधुक चंदने बिल्व अंबु गाढ़म तैलम अधे गंधपूर्ण. अर्थात सीता शर्करा मधु बिंबी इनको लेकर क्वाथ बनाना है, और इस क्वाथ के को तब तक मथना है जब तक ये ठंडा ना हो जाए, और उसमें चतुर्गुण तेल और तेल से चतुर्गुण जल और जल से चतुर्गुण दूध डालना है, और पुनः द्वारा उसमें 10 गुना दुग्ध सीता मधु और चंदन डालने के पश्चात उसको गाढ़ा करना है, और इस तेल से कर्णपूर्ण वातेय रोग में करना है.
ऐसा लिखा गया है कि इन योगों से बाधिर रोग का नाश होता है। आगे आचार्य ने इसकी चिकित्सा के विषय में बोला है, वक्ष्यते यह प्रतिशय विधि स अप्यत्र पूजित वाद व्याधिषु यशोक्तो विधि स च हेतु भवेत्। अर्थात कि वाद्य में प्रतिशय के समान चिकित्सा एवं वात व्याधि के समान चिकित्सा विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो कमिंग टू इट्स मॉडर्न पार्ट, deafness. Types. It is of three types: conductive, sensory neural deafness, and mixed deafness. So first coming to conductive deafness, the sound conducting mechanism of the ear is defective. तो इसमें जो डिफेक्ट है वो एक्सटर्नल ईयर से लेके एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर वेस्टिब्यूलो स्टेपिडो वेस्टिबुलर जॉइंट तक कोई प्रॉब्लम में डिफेक्ट हो सकता है, इन स्ट्रक्चर्स में डिफेक्ट हो सकता है। The cause may be present in external ear, tympanic membrane, middle ear ossicles, it's taken to defect may lie from external ear to stapediovestibular joint. Then coming to sensory neural deafness, it may occur due to eighth nerve lesions of cochlea, central connections of eighth nerve. Then coming to third type of deafness, that is mixed deafness. Presence of components of both conductive and sensory neural deafness in the same ear. इसमें कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल डेफनेस दोनों के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एयरबोन गैप इंडिकेटिंग कंडक्टिव लॉस, इसमें एयरबोन गैप प्रेजेंट होता है जो कि कंडक्टिव लॉस को इंडिकेट करता है। देन इंपेयरमेंट ऑफ बोन कंडक्शन इंडिकेटिंग सेंसरी न्यूरल डेफनेस, इसमें बोन कंडक्शन की इंपेयरमेंट हो जाती है जो कि सेंसरी न्यूरल डेफनेस को इंडिकेट करता है। तो एयरबोन गैप और बोन कंडक्शन की जो है इंपेयरमेंट, ये मिक्स डेफनेस को डिनोट करते हैं। Then coming to its classification, organic. It is conductive and sensory neural. Sensory neural is further divided into sensory and neural. Sensory means related to cochlear, and neural. And neural is divided further into peripheral, that is due to eighth nerve, then central due to central auditory pathways, and other type is non-organic. Then coming to conductive deafness, its features. Its features or characteristics include negative Rani test, verbal lateralized group area, normal absolute bone conduction, low frequencies affected mode. So these tests are tuning fork test. Rani test positive means when air conduction is more than bone conduction, and opposite to it is negative Rani test. Then Weber lateralized to poor ear means lateralization of Weber when put on the forehead is towards the poorer ear than the better ear from which the
person can listen better. Then normal layer, absolute bone conduction. Bone conduction is normal. In this case, in the case of conductive deafness, low frequencies are affected more. Audiometry shows bone conduction better than air conduction. With the air bone gap, greater the air bone gap, more is the conductive loss. So tuning for test and audiometry tests show the same results for air and bone conduction. Loss is not more than 60 decibel. Speech discrimination is good. Then coming to its etiology. First, congenital. It includes metal atresia, stapes foot plate fixation. As you know, the stapes foot plate opens into the oval window. Then fixation of malleus at ossicular discontinuity, congenital cholesteatoma. Cholesteatoma means presence of skin at the wrong place. Then other causes include in the external ear, any obstruction in the ear canal. I have told you already this thing. In middle ear, perforation of tympanic membrane, mass in the middle ear, fluid in the middle ear, disruption of ossicles, then fixation of ossicles, blockage of tracheal tube. So these are all the causes responsible for conductive deafness. When coming to its management, it includes removal of canal obstructions like impacted wax, foreign body, osteoma, exostosis, keratotic mass, benign or malignant tumors, metal atresia. So these obstructions have to be removed. Then removal of fluid. It is done with laryngotomy, with or without grommet insertion. Then removal of mass from middle ear, tympanoplasty means reconstruction of ossiculation along with laryngoplasty. Repair of perforation, ossiculation or both is known as tympanoplasty. Stapedectomy, hearing aid. In cases where surgery is not possible, refused or has failed, hearing aid is prescribed. Then coming to sensory neural deafness. In this case, Ranitas is positive. Verbal lateralized to better ear, bone conduction reduced on squares and absolute bone conduction test, more often involving high frequencies. So Ranitas is positive, that is lateralized to better ear conduction is better than bone conduction, and Weber is lateralized to the ear with good hearing. Bone conduction is reduced on squabs and absolute bone conduction test. स्क्वैब्स टेस्ट और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट में फर्क ये है कि स्क्वैब्स टेस्ट और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन जो है इसमें पेशेंट और एग्जामिनर का बोन कंडक्शन कंपेयर करते हैं. तो
स्क्वैप्स टेस्ट में तो क्या है कि एक ईयर को कवर कर लेते हैं, एक ईयर को कवर नहीं करते, दोनों ईयर्स को खुला छोड़ देते हैं। जबकि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में एक ईयर जिसको एग्जामिन करना वो खुला रखते हैं और दूसरे को बंद कर देते हैं बाई प्रेसिंग द ट्रिगर्स। और अगला इसमें डिफरेंस जो है वो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा जो डिस्टर्ब होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स थे। देन और इसके करेक्टरिस्टिक्स में आता है इसमें नो गैप बिटवीन एयर एंड बोन कंडक्शन का वन ऑर्डिनेटरी। इसमें एयर बोन कंडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, एयर बोन कंडक्शन कम में कोई गैप प्रेजेंट नहीं होता। लॉस में एक्सीड 60 डेसिबल, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इज पुअर, पर्सन को स्पीच के डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम होती है। देयर इज डिफिकल्टी इन हियरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइस, पर्सन को नॉइस में सुनने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। Then coming to its etiology, first congenital, it is present since birth due to anomalies of inner ear or due to damage of hearing apparatus. Then etiology of acquired type of sensorineural deafness include cause may be genetic or non-genetic. It appears late in life. Genetic cause may manifest late, that is delayed onset, may affect only the hearing. It may be part of a larger syndrome affecting other systems of body as well, like Meniere's disease. Then its common causes are trauma of labyrinth or eighth nerve, infection of labyrinth, noise-induced hearing loss, ototoxic drugs. Ototoxic drugs example include antitubercular drugs, antisyphilic drugs, etc. Then presbyopia, Meniere's disease, familial progressive sensory neural hearing loss, acoustic neuroma, sudden hearing loss, systemic disorders like diabetes, hypothyroidism, kidney disease, autoimmune disorders, multiple sclerosis, and blood dyscrasia. Then coming to his history, its diagnosis, for its diagnosis purpose, history is very important to know whether the problem is congenital or acquired, stationary or progressive, associated with other symptoms or not, involvement of other family members, and possible etiological factors. Then management, depending upon the etiological factor, is advised in case of sensorineural deafness. In case of sensorineural hearing loss due to syphilis, syphilis of the inner ear is treatable with high doses of penicillin with improvement in hearing. Hearing loss of hypothyroidism, it can be reversed with replacement therapy. Then in case of serous labyrinthitis, can be reversed by attention to middle ear infection. Then management of Meniere's diseases will prevent further episodes of hearing loss and vertigo. Perilimb fistula can be corrected surgically. Ototoxic drugs, they should be used with care and discontinued if causing hearing loss, and it is possible to regain hearing if the drug is stopped. Then noise-induced hearing loss.
It can be prevented from further distortion, removing the person from the noisy surrounding. Then rehabilitation of hearing impaired. जो लोगों को hearing impaired हो चुका है उनको rehabilitate कैसे करना है, उसके methods हैं. Instrumental devices like hearing aids, cochlear implants, assistive devices. Then training in speech reading, auditory training, speech conservation. So thanks a lot for listening to this topic. So now we have done the topic Vadhirya along with this modern, that is deafness. So it is an important disease, so study it carefully. If you have any problem, you can discuss it with me. So have a nice day. I will be back with my next lecture. Thank you. Thank you very much.